کی ایک پروسیڈنگز شروع کی جائے، کیونکہ قانون سامنے ہے، انٹرنیشنل کنونشنز آر دیر، انڈیا از وائلیٹنگ دم، اور اب تو ایک نیا پرنسپل آ گیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، جو کہ 2005 میں ہمیں ورلڈ سمٹ جو تھی یو این کی، all the countries of the world accepted it، کہ اگر کسی بھی ملک میں ظلم اور تشدد ہو رہا ہے تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹروین کرے انڈر R2P، رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ۔ سو سارے قوانین موجود ہیں، تو سوال وہی بار بار اٹھتا ہے کہ کیوں دنیا چپ ہے؟ یہ ہمارے میں کوئی ہم نے غلطیاں کی ہیں، خامیاں ہیں کہ ہم کیس نہیں پلیڈ کر سکے صحیح طریقے سے، یا دنیا ویسی اکنامک انٹرسٹ کے لیے ہندوستان جو مرضی کرے آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں وہ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ اور یہ اس کے باوجود کہ انٹرنیشنل میڈیا ہیز after the Prime Minister's UN speech in 2019 taken up the Kashmiri perspective، اور پہلی دفعہ انڈیا کا جو نیریٹو تھا on terrorism and so on, that is not holding. The narrative of linking RSS to Nazism is now being accepted far and wide. The Modi government is replicating what the Nazis did in Germany. But despite this, the governments, international community, the governments abroad, especially in Western states, who talk a lot about democracy and human rights, their silence is questionable. Because if they are silent on this, اگر آپ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑانے دیں گے ہندوستان کو، تو کل کون سے ممالک اس پہ چلیں گے؟ جس کی مرضی چاہے پھر کہے گا یہ گئی کنونشن، دیز ٹو ہیل ود جنیوا کنونشنز۔ سو اگر آپ پورے سسٹم کو جو بین الاقوامی قوانین کے ہیں، ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ہندوستان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی بلیوز کہ دیر آر انٹرنیشنل لاز، دیر آر انٹرنیشنل کنونشنز، اور جیسے ہمیں یورپین یونین GSP+ پہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ریز کرتا ہے، تو پھر دنیا کو ہر ہیومن رائٹس ایشو پہ بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ پاکستان کے لیے آپ اتنی چیزیں کریں لیکن ہندوستان جو آکیوپائڈ ٹیریٹری میں کر رہے ہیں اس کو آپ اگنور کریں، کیونکہ آکیوپیشن کے خاص طور پہ کنونشنز ہیں، جیسے فورتھ جنیوا کنونشن، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ججمنٹس ہیں، خاص طور پہ جو انہوں نے پیلسٹینین وال پہ دی ہے۔ سو the judgments of the international community are there, especially the ICJ. The international media has been talking about what is happening. We now demand that the international community, especially the UN and human rights organizations, raise the issue of Dr. Asya Andrabi before the sentencing, because the sentencing, if it comes, is, in my view, and if you look at international law, according to international law, it is nothing less than judicial murder. اس پہ کوئی دو پوائنٹ آف ویو نہیں ہے۔ اگر آپ فورتھ جنیوا کنونشن پڑھیں، جو ہندوستان ڈاکٹر آسیہ اندرابی کے ساتھ کرنے کو جا رہا ہے وہ جوڈیشل مرڈر ہے، تو کیا دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لے گی اور چپ کر کے بیٹھی رہے گی؟ یہ سوال سے میں آپ کے پاس آج چھوڑنا چاہتی ہوں، اور اب میں فلور دوں گی آسیہ اندرابی صاحبہ کے بیٹے کو کہ وہ بتائیں ان کا پرسنل ایکسپیرینس کیا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ First of all, I want to thank everyone who has come here today. So, as Ma'am Sheila Zahid actually gave an overview of the case. So, I was born in the year 1999, and 7 years before my birth, my father spent 7 years before my birth in prison. And it was in 1992 for the first time that my father, along with my elder brother, who was an infant at that time, and my mother, they were detained on the Srinagar airport. Now, my brother at that time was 6 or 7 months old, and he became Kashmir's youngest political prisoner, if you want to call it. But little did he know that one day he would be the son of Kashmir's longest serving political prisoner as well, because
as ma'am said, my father has been behind bars for more than 26 years now, more than 27 years. So in 1999, within 2 months of my birth, after 2 months, my father was detained. I don't have any memories of it, naturally. And ever since that day, he's been behind bars. And the only time I have seen him has been in the guise of a prisoner. The only time I have spoken to him has been in prison. The only time I have ever felt his touch has been in prison. And after father's detention, it was mother basically who looked after us, who raised us. And we grew up in hideouts because father was involved in resistance movement. And then my mother, Asian Ravi, along with her other associates, she was involved in the resistance movement. So we had to grow up in hideouts. And for the first few years of my life, my mother's real name was kept from me. I didn't know who she was because of the fear and because of the insecurity that was attached to her name. Because she feared that if I were to tell someone that my mother is Asian Ravi, it would lead to her arrest. And that is something that used to happen. The Indian police used to come visit our schools and they used to interrogate my brother about the whereabouts of mother. This was after father was detained. And once she was there for us, she became everything for us. She was the one who cooked for us, cleaned for us. She was the one who tried to fulfill the void that my father had left in our lives. But then it was in 2006 that I witnessed my mother's detention as well. And that was basically the first time in my life I felt pretty much like a half orphan. And I was not an orphan, both my parents were alive, but the Indian state made me feel like an orphan despite the fact that both my parents were alive. And I remember asking my mother, I used to ask her, why exactly is our father in prison? I was 6 or 7 at that time. At that time, we don't understand how occupation works. At that time, we don't understand why the Indian state is in Kashmir. And she used to tell me that my father is in jail because he did not do his homework. Because that was the only thing that would make sense to me as a child. And I thought, okay, that is why my father is in prison, because उन्होंने homework नहीं किया. And there was this one time when I was missing my father and I deliberately skipped my homework, thinking this was the only way I could be with him. But that did not happen. And that is when I realized that it's not about homework, it's about something else. And then mother was detained as well, and ever since 2016, she has been in and out of prison. And she has spent 12 years of her life in prison. And mahine mein, once in a month, I get to talk to her for 5 or 10 minutes. And even in those 5 or 10 minutes, the policewoman stands beside my mother, constantly reminding her of the fact that her time is running out. And it's in these moments that we feel how occupation kind of interferes in the most intimate and personal spheres of your life. I mean, why do these foreign or these alien forces think, or why do they feel entitled to deciding how long can a son speak to his own mother? And even when we used to go to prison to see my father, even the duration of hugs was regulated. After a certain point of time, we were told to separate. So I speak to my mother once in a month, and she's 60 now, and I'm 20, and we've barely spent some years together. And now that she's 60 and she's ill and she's in prison, it feels like the final stage of her life is already here, and I haven't yet spent any part of my life with her at our home. So this is something that, and this is not just my story, what I'm telling you is something that many other children in Kashmir go through as well. It's not just my story. People have had it worse, but I have this privilege of talking to you. I have this privilege of telling you how life is for us under occupation. So my mother always used to tell me that I used to ask her why our life is not normal, because it never felt normal. And she used to tell me that our life is normal, and I could never make sense of it. कि अबू नहीं है घर पे, अम्मा भी नहीं है घर पे, तो ये कैसी life normal है? But then as you grow up, you realize that when you talk about life under occupation, if you live happily, being under occupation, it's abnormal. If you're indifferent to the oppression around you, it's abnormal. So our people, they are fighting for their right to self-determination, and in this pursuit of self-determination, some of them end up in prisons, some of them end up in graveyards. But it's very human, because life under occupation is not normal.
it's so normal that the only time I can speak to my mother is once in a month. And उस टाइम पर भी वो जो 10 मिनट है, उस टाइम भी पुलिस वाली साथ खड़ी होती है, बताती है आप क्या बात कर सकते हैं, क्या बात नहीं कर सकते अपनी माँ से. So it's all humiliating. And this is something that people here need to understand, that when you talk about occupation, yes, geopolitics is a part of it, yes, international law is a part of it, but there is this personal and emotional cost to it that so many children in Kashmir have to face. Thank you. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर मुजाहिद गिलानी को. ये नेफ्यू है आसिया अंद्राबी के, and he is actually Andrabi family has a big presence in Pakistan since 1947. So it's not just some of the members have come now, but they do have links to Pakistan from 1947 onwards. Thank you. आप इधर आ Thank you, Madam Dr. Shirin Mazari. I'm very grateful and thankful not only to Dr. Shirin Mazari, to the Ministry of Human Rights, but also to the state of Pakistan, who has always stood behind and has always stood for the Kashmiris whenever it has been time, even when it was quite a difficult time for Pakistan. Ladies and gentlemen, today I present before you myself as the nephew of the lady in the veil, the person जिसको खातून आहन कहा जाता है मकबूजा जम्मू और कश्मीर. मैं आज आसिया अंद्राबी की आपसे बात करने वाला हूँ. आसिया अंद्राबी 1960 की दिहाई में 1962 में इनकी पैदाइश हुई थी और एक बिल्कुल जिस तरह एलीट क्लास फैमिली में एक लड़की होती है, आसिया अंद्राबी की परवरिश और पैदाइश के बाद बिल्कुल वो ऐसे ही रही थी. उन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, न्यूट्रिशन में बैचलर्स किया और उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से अरबिक में उन्होंने मास्टर्स कर लिया. आसिया अंद्राबी जिस तरह मैंने आपसे कहा एक एलीट क्लास फैमिली है जो एक रिलीजन का भी एक थॉट है, एक सोशल थॉट है कि हमारी आइडियोलॉजिकल थॉट है, उस तरह से जिंदगी गुजारते हुए इट वाज इन द मिड 80s दैट शी एक्चुअली गॉट ट्रांसफॉर्म्ड. आला तालीम हासिल करना चाहती थी एंड शी वांटेड टू गो टू हिमाचल प्रदेश. इंडिया में आला तालीम हासिल करना जब एक ख्वाब था और ख्वाब के बाद वो एक लिहाज से उनका एक जज्बा बन गया कि मैंने आला तालीम हासिल करनी है. उस वक्त माहिर खैर आबादी की एक किताब उनकी नज़र से गुजरी और मरियम जमीला, जिसको आज भी वो कहती हैं कि वो एक आइडल हैं उनके लिए, जिनकी ज़िंदगी को पढ़ के वो ट्रांसफॉर्म हो गई. It was in the mid 1980s that Asiya Andrabi laid the foundation of Doftaran-e-Millat. Doftaran-e-Millat वो तंजीम साबित हुई जिसने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल रिफॉर्म, एक सोशल रिफॉर्म लाया. Apart, set aside from the self-determination, the right of self-determination, जिसके लिए सब बात करते रहे, लेकिन women को वहाँ पे एक पॉलिटिकल मैचुरेशन देने के लिए, मैच्योर करने के लिए आसिया अंद्राबी की आवाज़ बहुत अहम साबित हुई. It was in 1990s जब आसिया अंद्राबी साहिबा ने it was in 1990s when Asiya Andrabi Sahiba married Dr. Qasim Faktu, also known as Ashik Hussain Faktu. An Adafis, a scholarly person in himself, and the couple spent only a maximum of 2 to 3 years together, and their sons, Ahmed bin Qasim and Muhammad bin Qasim, were raised with their parents mostly behind the bars. Ladies and gentlemen, Asiya Andrabi was first arrested in 1992-1993 under the Draconian Public Safety Act, as we all know. It was only Muhammad bin Qasim. He was only 6 months old at that time. And this is very important to understand that she has spent almost more than 12 to 15 years behind bars ever since 1992 till 2020. And she is the only leading female rebel who has been slapped with PSA more than 20 times. Public Safety Act, वो draconian law, जो हिंदुस्तान हर उस हुर्रियत लीडर पे, हर उस आवाज़ के ऊपर
लगा देता है जिसके लिए जो हिंदुस्तान के लिए खतरा बन जाती है. It was in October 2016 when Asia Andrabi was arrested when she was in a hideout, and along with her, her personal associate Fahmida Sufi and the Secretary General of Daftaran-e-Millat, Nahida Nasreen, were taken into custody as well. The role of Asia Andrabi is very important to understand, and why actually she has been taken behind bars, and why at this point in time the Indian state is so hell-bent upon delivering a life sentence to a lady whose husband is already behind bars and has been awarded a life sentence, whose family has been shattered, with the son being at one place, the other son being in another place. The whole family is distorted and disrupted. But let's discuss it. The role of Asia Andrabi in the peaceful organization has always been to uphold the rights of the Kashmiris, particularly the women. She has always stood against the cultural imperialism that India tags as normalcy in Kashmir. The branded commodification of the poor, destitute Kashmiri women, the so-called cultural shows where India proves itself as an autocratic ruler, and the colonial feministic approach of the oppressor were always strongly denounced by Asia Andrabi, both in words and in actions. Asia Andrabi stands as a woman who considers that women should have their own identity, who considers that they have an equal role to play in the society just like the men, but in their own sphere. It was therefore the ladies of Daftaran-e-Millat who urged the Kashmiri women to uphold their houses, while the men took to the roads and the front line in the freedom struggle. Political maturation in Kashmiri women led to a detestation by India, and therefore Asia Andrabi and her associates were always incarcerated under and framed under UAPA, under PSA, and now the Indian Penal Code. Ladies and gentlemen, Asia Andrabi को 2016 में श्रीनगर जेल में, सेंट्रल जेल में मुक़य्यद रखा गया था, लेकिन 2018 जुलाई का वो महीना है जब बिल्कुल जैसा डॉक्टर शीन मज़ारी साहिबा ने कहा है, उनको मैं कहता हूँ अगवा करके नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी को भी लेकर न्यू दिल्ली तिहाड़ जेल की तरफ मुंतकिल कर दिया गया. It was basically under this FIR number RC 17/2018 NIA DLI, under the sections 120B, 121, 121A, 124A, 153A, 153B, and 505 of the Indian Penal Code, and section 18, 20, 38, and 39 of the UAPA, the Unlawful Prevention Act. These sanctions deal with the criminal conspiracy, the punishment for which is life imprisonment; waging war, the punishment for which is death or being a lifer; conspiracy to wage war, a punishment of 10 years; sedition, life imprisonment; promoting enmity, 3 to 5 years; prejudice to national integration, to the Indian national integration, life imprisonment; statements inciting the public, conspiring, attempting a terror act, 5 years or life imprisonment; being a member of terrorist gang, which she definitely is not, running a very peaceful political movement of Daftaran-e-Millat, life imprisonment; and offences as a member of terrorist gang, 10 years, and supporting terrorist activities, 10 years. Ladies and gentlemen, it was on the 21st of December that the NIA ordered that they will be giving a verdict on either 14th or the 18th of January, and that has made this matter very important. Asia Andrabi साहिबा जो कि एक 60 साल से ज़ायद उम्र की खातून हैं, आसिया अंद्राबी साहिबा जो कि बीमार भी हैं, इस तमाम चीज़ को देखते हुए साथ साथ नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी जो कि एक यंग एज के अंदर होते हुए भी लंबागो, it's basically a chronic backache, उनको वो प्रॉब्लम है. आसिया अंद्राबी साहिबा is a patient of asthma. She is a patient of arthralgias, and she has been on medications for the past 6 to 8 years, and every winter she requires oxygen supplementation. But what happens in Tihar jail this time? Ladies and gentlemen, this is also to understand that back in 2008 she was taken into Amphala jail, Jammu, जहाँ पे 2 साल के लिए in a
temple-like prison, she was tortured by smoke inhalation. Continuous smoke inhalation has led to possible ILD, that is interstitial lung disease, and we suspect कि शायद lung fibrosis के element भी settle in हो चुका हो, but we don't have any access to a high resolution CT scan or any other modality that we can actually prove it. But at this point in time, we know that Asia Andrabi is suffering from severe chest infection. Nahida Nasreen, almost of the same age, is also suffering from a severe chest infection, while Fahmida Sufi was also suffering from an acute backache. At this time, जबकि उनको शायद एक हॉस्पिटल फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, आसिया अंद्राबी और उनकी इनमेट्स को, जो उनके साथ उनके एसोसिएट्स हैं, they have been transferred to a penitentiary where the women who have been kept are murderers, drug dealers, drug addicts, and serial killers. Considering a political prisoner जिसको international तौर पे recognize किया जाता है, she is being transferred to a penitentiary where all these people, where all these murderers and rapists are being held as well. We have a concern, a very grave concern about these, because all these inmates, they harbor Hindutva nationalistic thoughts. For once, हमें शायद हिंदुस्तान के सामने जो फौजी हैं, जो वहाँ गार्ड्स हैं, जो वहाँ की अदालतें हैं, उनसे जरूर खौफ, उनसे डर है कि हमारे खिलाफ क्या फैसला आता है. But at the same time, we believe that the jail inmates, जो वहाँ पे कैदी हैं, वो भी वहाँ इन कैदियों के साथ आसिया अंद्राबी, नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं that the jail inmates, particularly the Kashmiri ones, they were not only beaten, but incidents of death have also been reported. Ladies and gentlemen, in this COVID pandemic, we know that the inmates, and it's reported that the inmate, along with Asia Andrabi, turned out to be COVID positive. We have no information about how many tests were conducted after that and how many other inmates have contracted COVID-19 infection. We also know that the prison guard, outside the gates of Asia Andrabi's prison, had also contracted COVID-19. We do not know how many times she had served Asia Andrabi. We do not know how many times she had actually exposed Asia Andrabi once again, Nahida Nasreen Fahmida Sufi, to the COVID-19 infection. Whereas internationally, every jail is being thinned out of its population to prevent COVID-19 infection from spreading, India is doing exactly the opposite of it. Ladies and gentlemen, this is important, that what we want, why are we here today as the family and as the state of Pakistan, हम जो demand करते हैं, that is very simple. I have already narrated the sections, the articles and the charges उनके ऊपर frame किए जा रहे हैं, they are related to the terror activities as well. एक peaceful political organization को एक terror nexus के साथ इस तरह से affiliate and annex करने का मतलब ये है that you are actually killing the peaceful political movement inside the Jammu and Kashmir. What the family at this point in time needs and demands is that DEM is being, the Dr. Millat is being deliberately annexed to terror support and being terrorist organization, which will completely obliterate the strategy of political activism in Jammu and Kashmir. This clearly exposes the fact that Indian justice system, Indian judiciary, is merely an extension of the Indian oppression. Our demands is number one, is to probe into how these inmates are being kept, Asia Andrabi, Nahida Nasreen and Fahmida Sufi, keeping in view their age and their health. Our demand is to ensure a free and impartial trial, not under the Indian oppression and not under their Indian oppressive laws and regimes. Our demand is that stop victimizing Asia Andrabi, Nahida Nasreen and Fahmida Sufi in order to subjugate. Thank you. Madam. यही नाम है समा टीवी से हूँ. मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम जो हैं जिसपे आपने उनको खतूत भी लिखे और कोशिश भी की कि फौरन आपको की जानी चाहिए, लेकिन स्टिल जो आसिया अंद्राबी साहिब आए हैं और बाकी जो ख़वातीन हैं वो जेलों में कैद हैं, उनको ऑक्युपाइड टेरिटरी से बाहर शिफ्ट किया गया है. क्या जो ICJ का फोरम है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए? सीरियस मामला है. इंडिया तो किसी इंटरनेशनल फोरम को नहीं आता नहीं.
देखिए आईसीजे मेरा व्यू तो ये था और अभी भी है कि जैसे यूएन जनरल असेंबली में अभी एक रेजोल्यूशन पैलेस्टाइन पे बड़ी स्ट्रांग आई है, हालांकि इजराइल यूएस सब ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में मेजॉरिटीज वन वोट ओनली, तो हमें कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन ट्राई करनी चाहिए। आईसीजे में एडवाइजरी ओपिनियन थ्रू द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन करना चाहिए। उससे ज्यादा अहम मैं समझती हूँ हर पार्लियामेंट में विमेन कॉकसेस हैं। हमारा एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है विमेन पीस एंड सिक्योरिटी 2000 की, मेरा ख्याल में हमने उसको यूज नहीं किया जिस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये उसमें खास तौर पे विमेन के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के हवाले से रेजोल्यूशन है, क्या होना चाहिए क्या नहीं। और आपको पता है आसियान राबी की ऑर्गेनाइजेशन वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो खवातीन को सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्लेटफॉर्म पे लाई है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप खत्म करेंगे तो आप बेसिकली पूरी औरतों की मूवमेंट को आप अटैक कर रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं समझती हूँ हमें ज्यादा जोर से उठाना चाहिए। एक तो ऑफिशियल चैनल्स होते हैं कि आप यूएन जनरल असेंबली में जाएं, फिर यूएन ह्यूमन राइट्स, लेकिन हम स्पेशल रैपर्टर्स को भी नहीं इन्वॉल्व कर रहे। मैं समझती हूँ जो यूएन के स्पेशल रैपर्टर्स हैं, विमेन पे हैं, चिल्ड्रन पे हैं। पिछले साल मैंने 18 स्पेशल मैंडेट होल्डर्स को खत लिखा था यूएन के, क्योंकि कई बच्चों के इशू से डील करते हैं, कई खवातीन के, कई टॉर्चर के, तो इन सब को आपको अपील करनी चाहिए, नॉट जस्ट द यूएन जनरल असेंबली या यूएन सेक्रेटरी जनरल। यूएन के बहुत से इदारे हैं जिसको मैं समझती हूँ और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आप वो क्या कहते हैं यूके में जो तो बहुत बड़ा कश्मीरी डायस्पोरा है उसको ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे जा सकता है अंडर आर्टिकल 83 जिसका मैंने भी जिक्र किया। उसको मुझे नहीं समझ आ रही क्यों डायस्पोरा नहीं जा रहा, उसको वो एक्टिव होना चाहिए। बरतानिया में अब कानून आ गया है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे उन ममालिक में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस कर रहे हैं। तो देखिए ऑक्यूपाइड टेरिटरी का बहुत वाज़ेह तौर पे कवानीन है, पैलेस्टाइन के हवाले से भी और कश्मीर के हवाले से भी। तो हमें बरतानिया में ये प्रेशर यूज करना चाहिए कि जब उन्होंने ये नया लॉ बनाया है कि ह्यूमन राइट्स विल बी अ मेजर पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी, कि वो ये एक्शन लेंगे जिधर जिधर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी में जब जुल्म और तशद्दुद एक हुकूमत कर रही है तो ऑक्यूपेशन पावर, उसके खिलाफ आप एक्शन लें। ईयू के भी यही रूल्स है। ईयू की जो फॉरेन पॉलिसी आई है वो अगर आप पढ़ें उसमें ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा फीचर है। तो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी में जिसमें खास कवानीन, बैनुल अक़वामी कवानीन है, उधर एक्शन होना चाहिए। मैं समझती हूँ ज्यादा एक्टिविज्म ना सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे बल्कि जो डायस्पोरा हमारा है, और यूरोप में पाकिस्तानी डायस्पोरा है, कश्मीरी डायस्पोरा बहुत बड़ा है, ये चीजें और होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि फॉरेन ऑफिस कुछ नहीं कर रहा, मैं समझती हूँ कि और ज्यादा हमें करना चाहिए। खास तौर पे अब क्योंकि एक इशू हेड ऑन आ गया है और 14 या 18 को उस पर जजमेंट आनी है, उससे पहले हमें मोमेंटम बिल्डअप करना बहुत लाजमी है ताकि इंडियन स्टेट पे प्रेशर पड़े। क्योंकि जो नई इंडियन सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे, इट इज बेसिकली अगर ये सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आया दैट मींस ये जुडिशियल मर्डर है, उससे कम नहीं है। तो हमें ना सिर्फ खुद आवाज उठानी चाहिए बट डायस्पोरा को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को और गवर्नमेंट लेवल्स पे हमें ये ज्यादा फोर्सफुली मैं समझती हूँ रेस करना चाहिए। मैम पार्सा बुखारी फ्रॉम कंट्री न्यूज़। जैसे कि आपने खुद बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की साइलेंस है, यूएन की साइलेंस है, तो आसिया अंद्राबी साहिबा के केस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब क्या करने जा रही है? और मुजाहिद यानी साहब आपसे और आसिया अंद्राबी साहिबा के बेटे आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि करेंटली जो कश्मीरीज हैं उनको अपनी फ्रीडम मूवमेंट को परस्यू करने में कौन से चैलेंजेस और कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी फिर खत लिखा है यूएन सेक्रेटरी जनरल को और हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को, लेकिन मैं समझती हूँ खत के अलावा हमें एक्टिवली ये परस्यू करना चाहिए। चाहे आप एमिसरी भेजें,
آپ کی کشمیر کمیٹی بھی ہے, آپ کے کیا کہتے ہیں منسٹر بھی ہیں کشمیر افیئرس کے, آپ کی فارن آفس ہے, آپ کے پاس بہت سے ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو آپ ایکٹیویٹ کریں, دنیا میں جائیں, ہیومن رائٹس واچ کو کہیں, ایمنسٹی کو کہیں, میں سمجھتی ہوں ویمن کوکسز جو پارلیمنٹ کی ہیں ان سے بات کریں. یہ اس میں ایکٹیویزم چاہیے, ہم صرف بیٹھ کے فون کر دینا یا خط لکھ دینا میرے ویو پوائنٹ میں کافی نہیں ہے, اس سے آگے بڑھنا ہوگا ہمیں. کووڈ ہو یا نہ ہو, لیکن ہماری مشنز ہیں ہر جگہ, ہم زوم کانفرنسز پہ آپ بات کر سکتے ہیں, اور آپ میں سمجھتی ہوں بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں جو غالباً ابھی ہم نہیں پوری طرح کر رہے. دوسرا جموں کشمیر کے اندر جو ہمارے سب سے بڑے میجر چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ لیٹس بی آنیسٹ, بی جے پی گورنمنٹ یعنی مودی نے 2019 میں جو 5 اگست کا جو ایک ایکشن لیا ہے اس کے بعد سے ایک بلینکٹ کرفیو کیا گیا, اینڈ وہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن تو ابھی بھی وہاں پہ اس طرح سے موجود ہے. 1 نمبر 2 ہمارا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس وہاں جتنے بھی کشمیری یوتھ دے کم آن دا روڈ یا جب بھی ریزسٹنس کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے وہ بین کر دیے جاتے ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں اور ان پہ اتنا انعام ہے, اور کوئی بھی ایک بندہ یا ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ایکٹیولی انوالو ہو, ایک عام اسٹوڈنٹ ہو, اس نے صرف ایک واٹس ایپ گروپ میں کوئی بات کر دی ہو, اس کو بھی وہاں پہ اریسٹ کر دیا جاتا ہے. سو جو کربنگ آف وائسز ہیں وہاں پہ اس وقت وہ بہت شدید ہے. The restrictions on speaking even a single word about freedom, about secession, about saying that we are not part of India, وہ بہت restricted ہے. سو وہ آواز اس وقت بننا کہ اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا, اس کے بعد فرینڈس آف کشمیر ایز ان وہ تمام ممالک جو کہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا کرنے چاہیے, وہ تمام کے تمام کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس از ون آف دا میجر تھنگز دیٹ وی آر فیسنگ ایٹ دس ٹائم. بٹ انفارچونیٹلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو کچھ اسلامی ممالک بھی ایسے ہیں جو انفارچونیٹلی اتنا اچھا رول شاید پلے نہیں کر رہے پرو کشمیر, تو جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ اس طرح سے چینج نہیں ہو پاتی. The role of government of Pakistan has been proactive. After 5th of August 2019, خاص طور پہ they have really taken up the issue of Kashmir over all forums that they could have, from United Nations سے لے کے OIC, every government platform, every international platform as well. But what we are actually concerned is that yes, they are becoming our voice. The situation on the ground is not really changing much. ہمارے پاس جو وہاں پہ کربس ہیں وہ ویسے ہی ابھی بھی ہم فیس کر رہے ہیں. بٹ دس از اندر ایلیمنٹ, جس طرح ابھی پچھلے دنوں ایک جو سیر انڈیا کے خلاف ایک نکلا تھا, دیٹ انویسٹیگیٹو ایلیمنٹ, اس کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا.